students. This is Aribaleen, and today we will continue with lesson 2. I hope you people haven't faced any difficulties in covering lesson 1. And if you people have so note it down somewhere so we will continue it some other day. जिसके अंदर मैं आप लोगों को आप लोगों की जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्टीज हैं जो क्वेश्चंस हैं आई विल आंसर टू देम. Before moving towards the lesson that we are going to study today, I have to tell you something important. आप जो भी कॉपी वर्क में अपना लेसन स्टार्ट करें उससे पहले यू हैव टू मेंटेन टाइटल पेज एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द लेसन. Is that clear? Good. Okay. The lesson that we are going to learn today is about a caliph Harun al-Rashid. But before moving towards our exercises, I would suggest you people to go and read the chapter once. And when you will be done, come back here and join me. Have you guys read it? Okay. So let me tell you a brief view about what this topic is really about. हारून रशीद हम सबको पता है कि हमारे कैलिफ थे. वो बहुत ज़्यादा फेमस क्यों थे? वो बहुत ज़्यादा फेमस थे जो अपनी जस्टिस की वजह से, अपने विजडम की वजह से. सही है. उनको पता था कि उनको प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस करना है, उनको किस तरीके से जस्टिस के साथ सॉल्व करना है. वो जब बगदाद ही वॉज अ कैलिफ ऑफ बगदाद. ओके. तो जो बगदाद की स्ट्रीट्स थी वहाँ पे वो लोगों से नॉर्मली चलते हुए लोगों से बात करते थे ताकि वहाँ उनको जो कॉमन नॉलेज है ना वो सीख कर सकें. वंस व्हाट हैपेंड कि एक केस उनके पास आया और वो केस ये था कि देयर वर टू पीपल. One there was a beggar and the other one was a rich man, and both had a dispute that there was a horse, and they both claimed that the horse belonged to them. लेकिन सच किसी को कैसे पता चले? तो एक आदमी ये केस लेकर आया. तो हारून रशीद ने बोला कि ओके, करना ये है कि जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं ना, दे नो द टच ऑफ देयर ओनर. तो उन्होंने क्या किया, दोनों को, जो हमारा बैगर था और हमारा जो रिच मैन था, उन दोनों को बोला कि टच करो उसको, आई मीन हॉर्स को. तो जो हॉर्स जिसका जो है सेंस करेगा जिसके टच को, द ओनर विल बी दैट मैन. क्योंकि बैगर ने बोला था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे पैसे जो सेव करे थे मैंने इस पर लगा के इस हॉर्स को परचेज़ किया. जबकि ओनर ने क्या बोला, ओनर ने ये बोला कि ये जो हॉर्स है ये मेरा है और मैं यहाँ इसको राइड कर रहा था और ये जो बैगर है मुझे ये मिला और इसने मुझे बोला कि यहाँ तक मुझे छोड़ दो. तो और जब मैंने इसको छोड़ा तो अब ये बोल रहा है कि हॉर्स मेरा है. सो जो दोनों ने अपनी सिचुएशंस बताई थी, उन दोनों वी आर सपोज टू ट्रस्ट देम. लेकिन हारून रशीद ने इसको किस तरीके से डील किया? ही आस्क्ड क्या नाम है, द मैन आज हारून रशीद कि आप बताएं हम इसको किस तरीके से डील करें. तो उन्होंने क्या बोला, उनका जो सजेशन ये था कि हम क्या करेंगे, हॉर्स के टच से पता चल करेंगे कि ओनर बेसिकली कौन है. सो दिस इज़ वन ऑफ एन एग्जाम्पल जिससे हमें समझ आता है कि हारून रशीद जो थे, ही वॉज अ वेरी जस्टिफाइड मैन एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अ वेरी रीनोन कैलिफ. इज दैट क्लियर? ओके. Now moving towards question answers session. What was Caliph Harun al-Rashid known and respected for? Caliph Harun al-Rashid was famous for his wisdom and justice. The Caliph was wise in that manner as he used to discuss himself to know the problems and difficulties of the subject more freely and equality. उन्होंने बोला हारून रशीद जो है किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और इज़्ज़त दी जाती थी. तो हारून रशीद को उनके विजडम और जस्टिस की वजह से इज़्ज़त दी जाती थी. वो इस तरीके से बहादुर थे, इस तरीके से वाइज थे कि उनको पता था कि प्रॉब्लम्स को, मसलों को किस तरीके से सॉल्व करना है फ्रीली और इक्वालिटी के साथ, कि फेवरिज्म ना हो. Why did he go through the streets of Baghdad? He would go through the streets of Baghdad to mingle with the common people in order to gain first hand knowledge of their difficulties. He believed that by adopting the common lifestyle, he experienced the problem in true sense. वो बगदाद के रोड पे जो ऐसे क्यों घूमते थे? वो इसलिए घूमते थे ताकि जब वो नॉर्मल लोगों से मिलेंगे तो वो नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स को उनके मुंह से सुन के अडॉप्ट कर सकते हैं.
और जब वो नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड तरीके से सुनेंगे तो ही विल बी एबल टू सॉल्व देम more quickly and with more justice, right? Why did the Qazi say what did the Qazi say to the Caliph? Firstly, Qazi approached to the Caliph, saluted him, and presented a puzzled case, which the Qazi could not solve. The mystery was disturbing the Qazi because the two men were claiming the ownership of the same horse. काजी ने कैलिफ को क्या कहा? काजी पहले आया, उन्होंने उनको सल्यूट करा और एक बहुत मुश्किल सा केस, पजल मतलब परेशानी वाला केस उनके पास लेकर आया, क्योंकि काजी खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और वो मिस्ट्री ऐसी थी कि दो मैन जो है ओनरशिप कर रहे थे, बोल रहे थे एक हॉर्स की कि ये दोनों बात यही बोल रहे थे कि हॉर्स हमारा है। What was the dispute between the rich man and beggar? The dispute between the rich man and the beggar because of a horse. Both of them were claiming the ownership of horse plus accusing each other of robbery. डिस्प्यूट क्या था दोनों के दरमियान? डिस्प्यूट ये था कि रिच मैन और बैगर दोनों बोल रहे थे कि हॉर्स हमारा है, और दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि सामने वाले ने चोरी करी है। What did the rich man tell the caliph? The rich man told the caliph that he was riding towards the city. On this way, he saw a beggar who asked for a ride up to city gate. Afterwards, the beggar refused to get down from the horse and claimed that the horse was his. रिच मैन ने क्या बोला? रिच मैन ने बोला वो सिटी से राइड कर रहा था हॉर्स, रास्ते में उसको मिला ये बैगर। बैगर ने क्या बोला? उसको सिटी गेट तक पहुंचा दो। जब वो सिटी गेट तक गया तो बैगर ने हॉर्स से उतरने से ही मना कर दिया, बोला ये हॉर्स उसका है। What did beggar tell the caliph? The beggar told the caliph that he had spent all his money on the horse. That morning, the beggar was riding to the city and saw the rich man walking along the road. He asked for a lift because he was in a hurry, but afterwards refused to discount, claiming that the horse belonged to him. जो बैगर था उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो सारे अपनी ज़िंदगी की उसकी जमा पूंजी थी उसने उससे ये हॉर्स खरीदा है। एक मॉर्निंग वो हॉर्स चला रहा था तो उस रिच मैन उसको रास्ते में मिला। रिच मैन ने बोला कि मुझे लिफ्ट दे दो क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, और जब उसने लिफ्ट दे दी तो रिच मैन ने ये क्लेम कर दिया कि हॉर्स हॉर्स तो मेरा ही है। Why did the beggar refuse to go down the horse? The beggar refused to go down the horse because he wanted to rob the rich man of his horse. He also fabricated a false story to claim his ownership. बैगर ने क्यों रिफ्यूज़ करा? वो इसलिए रिफ्यूज़ करा क्योंकि वो चाहता था कि वो जो अमीर आदमी है उसका हॉर्स वो चोरी कर ले, इसीलिए उसने एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट करी। What did the horse do when the beggar touched it? When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. This reaction of the animals show that it was not owned by the beggar. जब beggar ने उसको टच करा तो हॉर्स अजीब सा हो गया, it winced away. क्यों? क्योंकि उसको जो है beggar का जो टच था वो उसका ओनर तो उसका वो नहीं था, इसलिए उसने उसका टच को भी नहीं पहचाना। ये जो सेंस होता है ये अल्लाह ताला एनिमल्स को देते हैं, that they know who their owner are. What did the horse do when the rich man touched it? When the rich man touched the horse, it neighed and snorted with pleasure. This reaction of the horse proved the true ownership of the rich man. जब रिच मैन ने हॉर्स को टच किया तो वो क्या हुआ? वो उसको प्लेजर मिलने लगा। तो और इससे क्या पता चलता है कि हॉर्स किसका था? रिच मैन का। Okay, what did the caliph say to the beggar? The caliph pronounced the beggar that he was a liar and wicked man, and by forgiving him, asked him to beg the pardon of the rich man. Afterwards, the rich man forgave him. कैलिफ ने बैगर को क्या कहा? कैलिफ ने बैगर को बोला कि वो एक झूठा और बुरा इंसान है। उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और बोला कि उसको चाहिए बैगर को कि रिच मैन से क्या करे? माफ़ी मांगे। जब उसने माफ़ी मांगी तो रिच मैन ने उसको माफ़ कर दिया। Here we are done with question answer session. Now we are moving to multiple choice questions. Caliph Dash ur Rashid was known and respected for his justice and wisdom. Harun or Rashid. The two men were fighting over a dash. Dog, horse, camel, petty thing.
They were fighting over a horse. The beggar told the caliph that he would dash the horse belonged to him. Okay. Beggar also told the caliph that whatever money he had, he'd dash on the horse. Wasted spent, put used spent. Beggar also said that he was dashed because of the horse, poor, in rags, pauper, in debt. The rich man readily dashed the beggar, pardoned, excused, condoned, forgave. The rich man also gave the beggar a handful of dash gold coins, currency, gold, money. The noble action of rich man dash everybody in the court. Pleased, influenced, gladdened, cheered. Caliph told the beggar that he deserved severe dash. Punishment, sentence, fine, penalty. Caliph asked the beggar to beg dash of gentlemen, pardon, forgiveness, excuse, favor. This is the end of our lesson number 2. I have attempted all the question answers by myself for you, but you will do these multiple choice questions by your own. And we will see who has done it right and who had not. Till next time, Allah Hafiz people, stay home, stay safe.